मेरे दोस्त मेरे बुक शेल्फ की फ़ोटोज़ देख लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे पास आकर के कुछ किताबें लेकर के जाएंगे हम पढ़ने को। एंड लोगों को रीडर कन्वर्ट करते करते मेरी बुक शेल्फ आधी हो चुकी है। दिस नीड्स टू स्टॉप। आज से ज़ीरो लेंडिंग पॉलिसी टू एवरीवन। ये वीडियो मैं अपनी सहूलियत के लिए बना रही हूँ कि आपको किताबें खरीदनी है, आप यहाँ से देख के किताबें खरीदें और खुद रीडर बने। आई एम नॉट कन्वर्टिंग एनीबडी बाय लेंडिंग देम माई बुक्स नाउ। वेल, दिस इज़ चारू। वेलकम टू किताबी कैबिन्स। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फॉल इन लव विद रीडिंग। और अगर आपने कोई भी किताब नहीं पढ़ी है इन योर लाइफ, आई वॉन्ट यू टू फॉल इन लव विद द वर्ड्स। क्योंकि जब तक आप शब्दों के साथ में प्यार में नहीं पढ़ोगे तब तक आप टिक नहीं पाओगे टू द नेक्स्ट बुक। वो सिर्फ आप एक कहानी के साथ प्यार कर लेंगे, बट यू वॉन्ट बिल्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड कंसिडरिंग सबका अटेंशन स्पैन इस वक्त पे कैसा है, तो आई वॉन्ट टू रिकमेंड अ शॉर्ट बुक फॉर यू टू स्टार्ट योर जर्नी विद, बिकॉज आई डोंट थिंक किसी के पास भी इतना अटेंशन स्पैन है इस वक्त पे टू सिट थ्रू 300 पेज की नॉवल। फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट योर हैंड्स ऑन टू समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू। मैंने इस चैनल पे बहुत ज़्यादा जॉनरा स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बनाई है ऑफ सम जॉनरास जिनका मुझे लगता है मुझे पता है एंड आई कैन टॉक एंड रिकमेंड अबाउट देम। यू कैन गेट मोर रिकमेंडेशंस फ्रॉम हेयर एंड दिस हॉबी इज़ अ ट्रीट। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस द प्योर प्लेजर ऑफ रीडिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। बट अगर अभी भी मुझसे कोई पूछता है ये सवाल कि चारू रिकमेंड मी अ बुक, आई वॉन्ट टू गेट इन टू रीडिंग, आई स्टिल गेट पैरालाइज्ड विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है। मैं आराम से बैठ करके मिर्च मसाला नमक लेकर के सब कुछ कंसिडर करते हुए, कंसिडरिंग कि आपके टेस्ट और पर्सनालिटीज़ कैसी हैं, उस हिसाब से आई केटर ऑन टू अ स्पेसिफिक बुक और फिर मैं आपको वो रिकमेंड करूँगी कि अच्छा आपको ये पढ़नी चाहिए, दिस विल स्टिक अराउंड विद यू, बिकॉज इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे को वो आदमी नेक्स्ट किताब उठा रहा है नहीं उठा रहा है, दैट उसका सारा ब्लेम मुझे आएगा। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एन्जॉय रीडिंग टू इट्स कोर। बट येस, कमिंग बैक टू द बुक रिकमेंडेशंस, द फर्स्ट बुक विच इज़ वेरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। अगर मुझे कुछ भी नहीं पता होता आदमी के बारे में अबाउट व्हाट डू दे लाइक, व्हाट वुड दे लाइक टू कंज्यूम इन जनरल, तो मैं एक किताब है जो हर एक आदमी को रिकमेंड करती हूँ इफ़ यू वांट टू गेट इनटू रीडिंग, व्हिच इज़ द ग्रोन अप्स बाय गिलन फ्लिन। द राइटिंग इज़ क्रिस्प, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इट्स अ पेज टर्नर बुक। ये एक सेटिंग में ख़त्म कर दोगे आप आराम से। द नेक्स्ट बुक रिकमेंडेशन इज़ फॉर समवन हु वांट्स टू रीड नॉन फिक्शन। यू वांट द बुक टू मोटिवेट यू इनटू डूइंग समथिंग। आई वुड रिकमेंड यू द स्कूल ऑफ लाइफ बाय एलन देवतौन। Read anything written by this man. The genre of self-help is something that is conned upon a lot by the pseudo-intellectuals, perhaps because it is against the idea of emotional education. But I also get that the current status of the self-help genre is not very nice. But if you want to get into this genre, please get your hands onto this book. Another book is A Religion for Atheists on Being Nice by School of Life. It's also a very nice read. And Confidence by School of Life is also a lovely book. The next recommendation I have is for someone who is an artist. You draw, you're a painter, you're a filmmaker, you're a photographer. You are already in the world of art and you want to start reading. The recommendation I have for you is Art Object by Janet Winterson. Oscar Wilde suggests that if you want to be a worthy critique, you need to worship at the temple of God as an artist. Janet Winterson, being a writer, the artist herself, did such a wonderful job at putting how the world of art is important into words for us. She's a devotional writer talking about why art matters and for people who are making art and for us to be creating serious art around us. The next recommendation I have is for someone who wants to read in the genre of literary fiction. You want the words to stab your little heart. You want a character study on human emotions. The book recommendation I have for you is The Unaccustomed Earth by Jhumpa Lahiri. It's a collection of short stories where we are following Indian immigrants who are living abroad. It's a collection of short stories, तो इसमें काफ़ी short stories हैं जो आप एक एक करके पढ़ सकते हैं. My particular favorite is Hill Haven from the collection. The next recommendation I have is for someone who wants to go into poetry. Poetry के ऊपर मैंने एक dedicated video बनाया हुआ है पहले भी. But and usually the first person I recommend to anyone is Wendy Cope. Wendy Cope is so witty. She's so clever with her words, and they are also very simple to understand at the same time. Maybe I recommend Wendy Cope the most is क्योंकि मेरे को first time poetry hit after Wendy Cope होना शुरू करी थी, and then I moved on with my reading journey. But yes, another recommendation I would like to give is selected works of Kamla Das. It is a beautiful collection. बहुत ही खूबसूरत काम है. The words are delight to listen to, and I hope you enjoy
reading the books I've talked about. अगर आपको genre specific जाना है तो you can go and binge onto another recommendations of mine. And reading is a very personalized journey. I know सब लोगों की बहुत अलग अलग किताबें रहती हैं which just hit the spot and you finally dive into the world of reading even more after certain books. And I would love for everyone to comment down any 3 of the books which helped you become a reader yourself. It would be very nice for the community to engage and interact at the same time. These were my recommendations for today. Thank you for being here. Thank you for being kind. And I will see you next time.